Hello friends, welcome to EduTap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination, wherein we'll be doing 15 MCQs in a session related to labor laws and industrial relations. So here in this session we are going to see the industrial relations overview chapter part 2. We'll be dealing with another 15 MCQs. Why is this series important? See, when it comes to UPSC EPFO exam, be it for APFC, okay, or AO or EO examination, these topics are very important, as close to 15 plus MCQs come from these topics. And if you can prepare well, even the basics of them also, you should be able to clear very easily 10 MCQs. Okay, so which actually is a very good weightage. It has a very good weightage and high scoring potential as well. So if you are preparing for any of these components, I suggest you to go through this series and utilize this for your both preparation as well as your revision as well, because whatever that we are covering in these sessions, that are all in the form of MCQ, so that it will be a great option for your revision as well. So hope you'll utilize this, and moreover we are expecting the notification of UPSC EPFO 2025 very soon. So let's get into the session now. So friends, coming to the first question in this session, so the Bombay Mill Hands Association, established in 1890, was a significant milestone in the development of industrial relations in India. See, when in 1881 the enactment of Factories Act has happened, after that lot of changes have happened in the industrial sector. Okay, that has helped the workers to know about their rights and all that. Since then, slowly, since 1881, after the enactment of that Factories Act, slowly various workers organizations have started to begin, taking place. So in as part of that only, the Bombay Mill Hands Association, it is a first workers association to be established in India, and this was established by one of the following persons who played a key role in the formation of this association. After this, several other associations have also tried to form, but still उतना सही से नहीं हो पाया था. एंड उसके बाद 1926 में जब ट्रेड यूनियन एक्ट आया था, उसके बाद थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन शुरू हो गया, तो एक फॉर्मल वाला आ गया था. बट द फर्स्ट जो अच्छी तरीके से जो वर्कर्स एसोसिएशन था जो आया था इन इंडिया, इट वाज द बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन. एंड ये एसोसिएशन को लॉन्च करने वाले कोई और नहीं, मिस्टर NM लोखंडे थे. So moving on to our next question, the formation of which organization in 1920 marked a significant development in the labor movement in India. So जैसे हमने देखा फैक्ट्रीज एक्ट आ गया था, उसके बाद क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था 1914 to 1918 एज वी ऑल नो. ठीक है, ये वर्ल्ड वॉर आते ही प्राइसेस इंक्रीज हो गए, फिर wages तो उतने ही थे, they haven't increased or something, and the workers they started facing economic distress. एक situation आ गया था, and that all led to labor unrest, which led to the increase in number of strikes and all that. ओके उसके बाद ये सारे स्ट्राइक्स होते होते 1917 में एक स्ट्राइक हुआ था टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का, विच वाज लेड बाय महात्मा गांधी इन 1917. एंड अदर स्ट्राइक्स होती है, तो हो गया एक्सट्रीम ऊपर गुजरात, एंड नीचे जब आओगे तो व्हेन इट कम्स टू एक्सट्रीम डाउन साउथ, मद्रास में भी हो गया था. What do you say, the strikes, various strikes by the, because of this unrest, prices increase, wage कुछ increase नहीं हुआ and all that. Workers of Buckingham and Carnatic Mills, उन्होंने भी 1921 में strikes कर दिए थे. Now all this was happening, and meanwhile क्या हुआ था 1919 में, when all this was happening only, meanwhile International Labour Organization was launched. Okay, वो start हो गया था, formed, it was formed. So International Labour Organization was formed in 1919. उसके बाद that actually gave movement or some boost to the labor movement.
ओके सो उसके बाद ये तो हो गया इंटरनेशनल लेवल में. उसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, 1919 में आईएलओ स्टार्ट होने के बाद 1920 में इंडिया में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ एंड दैट लेड टू सम सपोर्ट टू दीज workers who are trying to form some association and trying to agitate against whatever operation that was happening against them, and all this led to the formation of the Trade Unions Act जो 1929 में हुआ था. So here the correct answer is C. Moving on to our next question. The establishment of tripartite consultative machinery in 1942 played a crucial role in shaping the industrial relations in India. Which of the following best describes the tripartite nature of industrial relations? ये अगर हमने देखा ऑलरेडी एक बेसिक इंडस्ट्रियल रिलेशंस किस तरह से होते हैं, बाईपार्टाइट, ट्राईपार्टाइट रिलेशंस एंड ऑल दैट वी हैव सीन. सिमिलरली इंडिया में भी उसी तरह का, उसी फ्रॉम द सेम व्हाट यू विल से फ्लो, दे हैव कम अप विथ अ ट्राईपार्टाइट कंसल्टेटिव मेशनरी, दैट इज सब 3 parties coming together. कोई भी प्रॉब्लम होगा तो all these 3 parties will come together to resolve that amicably. So 1942 में ये establish हुआ था and this framework includes workers जो employees है, employers जो उनके ओनर्स है एंड द गवर्नमेंट ऑन वेरियस लेबर इश्यूज. इससे क्या हो गया, जो सफर जो कर रहे हैं काम उनका भी इन्वॉल्वमेंट है इन द डिसीजन मेकिंग, इन द मैनेजमेंट प्रोसेस, जो भी उनका डिसीजन होगा. एम्प्लॉयज तो है ही एंड इन ऑर्डर टू कीप इट बैलेंस गवर्नमेंट भी उसमें था. दैट वी हैव ऑलरेडी सीन कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एज पर द इंडस्ट्रीज दे विल बी इन्वॉल्व. सो हियर ये फ्रेमवर्क की वजह से दैट हैज in this tripartite consultative machinery includes all these 3 and this has helped a lot in resolving various labor related issues. So here A is the correct answer. So coming to the next question. Now what was the primary objective of the industrial truce resolution adopted in 1947? See, when we talk about, in fact एक अगर हम लोग एक chronology देखेंगे, when it comes to industrial relation, we can divide that into pre-independence era and post-independence era, or pre-independence phase और post-independence phase. जो अभी हमने 1942 का जो देखा था, where a tripartite machinery that has been established, वो pre-independence phase का था. Now वो तो हो गया that they have come up, but after getting independence we have to get some changes. So after that is post-independence phase, India, what Indian government, what they thought was, let's do something to avoid, to reduce this labor unrest and increase the industrialization for growth and generation of employment in India. As part of which 1947 में a tripartite conference was held, wherein tripartite में workers, employers and the government, they were involved, and that led to the establishment or adoption of the industrial truce resolution. Now इस resolution का क्या है? Now this resolution urged both the management, that is the employers, and the labor to commit to maintain the industrial peace and avoid work stoppages for the next 3 years. Why? Because तभी हमें independence मिला था. Now we have to establish ourselves, right? हमें world के economy में अपने economy को establish करना है. For that we have to work little bit more hard. So in order to do that, in order to improve our industrial, क्योंकि industries अगर बढ़ेंगे तो obviously employment बढ़ेगा, employment बढ़ेगा तो again that will add to the economy only. So for that they have requested truce, एक मतलब कुछ problems भी हो गए तो छोटे मोटे you have to amicably resolve that, but you should not stop the work at any cost, so that हम अपने development को बिल्कुल रोक नहीं सकते. उस तरह से उन्होंने किया था. As part of this resolution, truce resolution, 3 years तक काम रुकेगा नहीं. Now after that in 1950 the labor relations bill was introduced. Okay, majorly the concept of collective bargaining. See, दोनों का नुकसान नहीं होना चाहिए, and as part of it they have introduced, but though this bill was not passed, whatever might be the reasons, but that has paved a way towards this development, that is non-legal bipartite approach of solving the industrial disputes. कि government के बिना ही यही employers and workers ही amicably disputes को resolve करने का एक approach
was laid down because of that bill, though it could not pass. So here in this case, the primary objective is to encourage industrial development and maintain industrial peace. As I've said, उसके लिए उन्होंने एक ट्रूस वो एक रेजोल्यूशन ले आए थे, as part of which they asked कि बिल्कुल पीस होना चाहिए 3 years तक, no work stoppages. Coming to the next question, which of the following statements best reflects the approach towards industrial relations during the first and second 5-year plans in India? Now ये industrial relations का जैसे हमने chronology देखा था होते होते now came the प्लानिंग कमीशन, वो अपना 5-year प्लान्स अपना वो सब डिज़ाइन कर रही थी, एज पार्ट ऑफ विच फर्स्ट 5-year प्लान 1951-56 के बीच में लॉन्च हुआ था. वेरियस इंडस्ट्रीज पे फोकस था, वेरियस सेक्टर्स, आई शुड नॉट से इंडस्ट्री, सेक्टर्स, वेरियस सेक्टर्स पे फोकस हुआ था, एज पार्ट ऑफ विच इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे भी फोकस था. एंड व्हाट दे सेड वाज मेजरली सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्प्यूट्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ओके, एंड फॉर विच एक ग्रीवेंस प्रोसीजर्स होनी चाहिए, एंड फॉर विच दे सेड दैट whatever the disputes that are there, that should be amicably resolved between them through tripartite bodies wherein the workers, that is the labor, the management and the government will be involved. So इतना तक उन्होंने किया था. After that came the second 5-year plan between 1956 to 1961. So इसमें क्या है, they said that okay, फर्स्ट वाले में हमने बोला है कि दे हैव टू मेंटेन दैट पीस एंड एवरीथिंग एंड कंटिन्यू विद द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, राइट. नाउ सेकंड वाले में दे हैव इवॉल्व द नॉर्म्स, कोड्स, वेरियस मेथड्स फॉर अचीविंग दैट हार्मनी एंड डिसिप्लिन इन इंडस्ट्री. ओके, सो स्लोली स्लोली एज यू कैन सी बहुत अच्छी तरीके से वो डेवलपमेंट हो रहा था. सो एज पार्ट ऑफ विच दे सेड दैट they prompted voluntary arbitration and workers participation. They wanted to increase in the management. See, once they get involved, obviously they'll have that what you'll say trust आ जाता है कि हमारे बंदे भी उसमें involved है, thereby will not be cheated, हम भी है उसमें. So वो सब जैसे कुछ अलग से norms वो सब उन्होंने set किया था. As part of which in 1958 एक joint management councils they have launched. उन काउंसिल्स मतलब जहाँ जहाँ जिसमें इंडस्ट्रीज में वो होना चाहिए करके. In 1957, the Indian Labour Conference that was organized majorly to highlight the maintenance of discipline in industries. And during that conference, after that conference only, that paved way to create Code of Discipline in 1958, along with the formation of joint management councils in the industries, जहाँ पे उनका तीनों का ट्राइपार्टेट इन्वॉल्वमेंट होगा एंड जो भी डिसीशंस होगा वो होंगे. एंड देन एडिशनली 1958 में ही द वर्कर्स एजुकेशन स्कीम वाज आल्सो लॉन्च्ड टू सपोर्ट द इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो फर्स्ट 5-year प्लान मेजरली फोकस्ड एम्फसाइज्ड ऑन ग्रीवेंस प्रोसीजर्स कि किस तरह से करना है, कोई भी प्रॉब्लम आए तो, एंड ट्राइपार्टाइट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तीनों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. वाइल द सेकेंड प्लान प्रमोटेड वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट. सो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो 1957 में हुआ है, दैट लेड टू ऑल दिस. 1958 में ही बहुत सारी चीज़ें हुई, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स आए, कोड ऑफ डिसिप्लिन आया, वर्कर्स एजुकेशन स्कीम आया, इन सो दैट लेड्स दैट. सो दिस इज द करेक्ट आंसर in this case. So coming to the next question, consider the following statements regarding industrial relations during the third 5-year plan 1961-1966. Which of the following statements given below is or correct? Let us look at the statements. The Industrial Truce Resolution of 1962 was adopted to promote peaceful dispute resolution and enhance production. Yes, earlier जो truce resolution हुआ था, again they have done in 1962, and that also they truce, peace, that's it. So that's what they have focused on. The establishment of Central Wages Board, Safety Councils and the Model Grievance Procedure took place during this period. जो हमने 1957-58 में देखा था, in the second 5-year plan they have come up with lots of conferences, उसके बाद कुछ councils and all that. उसका एक what you'll say formal procedures under the government that has taken place. एक shape मिल गया था उनको in the form of Central Wage Board, Safety Councils, Model Grievance Procedures, etc.
ये एक हो गया. नेक्स्ट ये भी ट्रू है. एंड द फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर वाज अपॉइंटेड ड्यूरिंग दिस प्लान ओनली टू कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन इंडिया. एंड यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. थर्ड 5 ईयर प्लान में यही 3 मेजर वर्क्स हुए हैं व्हेन इट रिलेटेड टू industrial relations in India. So here D is the correct answer because all of these statements are true. Coming to the next question, consider the following statements regarding industrial relations in India during the 1970s. Okay, so 1970s मतलब आप समझ सकते हो starting 4th 5 year plan, the rest of them. Which of the following statements is or are correct? Let us look at the statements. The early 1970s saw significant industrial strife with increasing political interference in trade unions. So slowly ट्रेड यूनियंस का जब स्टार्ट हुआ था, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस ऑल्सो है स्टार्टेड, विच दैट ऑल्सो लेड टू, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस पे नेगेटिवली नहीं देख सकते यहाँ पे, but the efforts that for maintaining the industrial peace initiated in the early years of independence proved to be inadequate because of this interference. So they tried every possible manner to maintain that, they couldn't do. So in order to address the ongoing volatile economic situation or the conditions in the country, 1975 में गवर्नमेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया. The second statement says that. So this is here in this case first statement is true. The government declared emergency in 1975 during which the right to strike was suspended to control the economic and industrial instability. जब political interference बहुत ज़्यादा हो गया, out of control, though the government has tried in every possible manner to control that, okay, they couldn't do, and adding fuel to that economic instability भी हो गया था, because of which the government had to come up with the emergency. So ये हो गया. Yes, this is also true. Now the industrial policy resolution after that came, emergency हट गया था, and after that the industrial policy resolution came in 1980. Now this completely overturned the principles of the industrial policy resolution of 1956. No, 1956 में जो industrial policy resolution हुआ था, in fact they have reaffirmed those earlier resolutions. Okay, उसमें 1956 में जो भी resolution लिए वही इन्होंने reaffirm किया है, rather than coming up with something very much new. reaffirm करते हुए कुछ और add किया होगा, but otherwise they haven't overturned, in fact they have reaffirmed them. So this is false. So here in this case only 1 and 2 statements are true, so A is the correct answer. So coming to the next question, अभी जो हमने 5 year plans में क्या क्या हुआ है वो हमने डिस्कस किया. So first, second, third, fourth and 1970s, right? So during which 5 year plan was the first National Commission on Labour appointed to comprehensively review industrial relations in India? So उसी का रिवाइज मतलब रिवीजन क्वेश्चन आप समझ सकते हो. So in this case it was the third 5 year plan during which the first National Commission on Labour was appointed. Okay, so ये third 5 year plan में हुआ. So what was the primary context in which the second National Commission on Labour was established? See, when the first, we have already seen that India has established 2 National Commissions on Labour as per this question. So basically दोनों भी एक ही चीज़ के लिए लॉन्च किए गए थे और एस्टेब्लिश किए गए थे, मेजरली टू रिव्यू द लेबर रिलेटेड इश्यूज, जो भी वेरियस लेबर रिलेटेड इश्यूज, एंड प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशंस, अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशंस. बट when the first commission was formed, क्योंकि उसी टाइम में हमें इंडिपेंडेंस मिला था, so majorly that was formed to examine the state of industrial relations in India, because that was the initial phases of government led industrialization for economic development in India, right? क्योंकि उसी टाइम पे हम लोग फोकस कर रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन को, how we can lead, utilize it very well for the economic development. Okay, so that focuses mostly on that. But the second one, the second Commission on Labour was appointed during the period of economic liberalization, so that focused on that liberalization के टाइम पे जो भी बहुत ही as per the requirement lot of decisions were taken, so उस पे फोकस कर रहा था. So here during the period of liberalization the second National Commission on Labour was launched, and hence here B is the correct answer.
सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमने देखा इससे पहले कि इंडिया में दो नेशनल कमीशन ऑन लेबर आए थे. अभी उनके बारे में थोड़ा सा इन डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे, अगेन इन द फॉर्म ऑफ MCQs. ओके, सो हियर the question says, with reference to the first National Commission on Labour which happened between 1966 and 1969, consider the following statements. Which of the following statements given below is or are correct? Okay, so first, it was constituted under the chairmanship of Justice PB Gajendra Gadkar and submitted its report in 1969. Yes, it was happened in that only. 1916 अगस्त में ये रिपोर्ट सबमिट हुआ था. 1966 दिसंबर में ये कमीशन was set up. Okay, yes, this is very much true. The commission addressed various aspects of labor welfare, including wages, social security, industrial relations, and workers' training. They have included everything in that, and they looked into the relationship between the workers and employers. उनका किस तरह से वो relationship है, what was the machinery of relationship between them, bipartite था, tripartite था, how it was, all that they have studied. Yes, this is also true. They have looked into every aspect. Its recommendations led to the amendments in key labor laws such as the Industrial Disputes Act, the Factories Act, and the Employees Provident Funds and the Miscellaneous Provisions Act. Yes, all these उन्होंने जो भी रिकमेंडेशंस दिया है उसके बेसिस पे अमेंडमेंट्स लाए गए थे इन ऑल दिस एक्ट, सो दैट उनके रिकमेंडेशंस को वो अप्लाई कर सके ऑन द ग्राउंड लेवल. सो यस, दिस इज ऑल्सो वेरी मच ट्रू एंड दैट हैज़ लेड. ये तो मैं बहुत कम यहाँ पे एक्ट्स दे रही हूँ, और भी बहुत सारे थे, जैसे आयरन और मैंगनीज और एंड क्रोम और माइंस लेबर वेलफेयर फंड एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट माइंस लेबर वेलफेयर फंड एक्ट. ऐसे कई सारे एक्ट्स थे, बहुत सारे एक्ट्स थे जिसमें अमेंडमेंट्स लाए गए थे बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस डन बाय दिस कमीशन. सो उन्होंने उनकी वजह से, मतलब रिकमेंडेशंस की वजह से बहुत कुछ चेंजेस लाए गए थे. दैट हैज़ लेड टू एक डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन इंडिया. सो हियर ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, हेंस डी इज द करेक्ट आंसर. Coming to the next question, the recommendations of the first National Commission on Labour 1969 played a crucial role in the enactment of which of the following legislations? So here अभी हमने डिस्कस किया था. सो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशंस एक्ट, यस दिस इज ट्रू. इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, यस दिस इज ट्रू. चाइल्ड लेबर एक्ट, दैट इज प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट, यस दिस इज ट्रू. ये तीनों है. दिस नॉट माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन, इसमें कोई उनका रोल नहीं था. इनफैक्ट आयरन और मैंगनीज और क्रोम और लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट माइंस, उनके उसमें उनका था. सो हियर ओनली 1, 2, 4 आर ट्रू. सो बी इज द करेक्ट आंसर हियर. Now, which of the following statements best describes the significance of the second National Commission on Labour 1999? See, as I've said earlier also, first Labour Commission focused on वेरियस अदर रिलेशन की उनके मैकेनिज्म क्या है, वर्कर एंड एम्प्लॉयर्स का रिलेशन एंड वेरियस अदर नुआंसेस दैट दे हैव लुक्ड इनटू. बट सेकेंड नेशनल कमीशन जो लॉन्च हुआ था 1999 में विथ रविंद्र वर्मा एज इट्स चेयरमैन, एंड दे हैव सबमिटेड द रिपोर्ट इन 2002. ओके, 2002 में उनका रिपोर्ट सबमिट हुआ था एंड रविंद्र वर्मा वॉज द चेयरमैन फॉर दिस. नाउ दे फोकस्ड ऑन, ये भी हमने एक बेसिक क्वेश्चन की तरह हमने कवर किया था, दे फोकस्ड ऑन द constitutional response for the economic reforms that have occurred, that is the liberalization. LPG जो हुआ था 1991 में, उस पे फोकस कर रहा था. सो हियर इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 एंड एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. क्योंकि तीनों का ऐसा नहीं कि लिबरलाइजेशन मतलब सिर्फ उस पर फोकस करेंगे. दे फोकस्ड ऑन LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, and how that globalization is impacting on labor laws, industrial relation and workers welfare. All this they have looked into, and based on the analysis they have submitted the report, and based on that only उन्होंने इंश्योर किया था कि वर्कर्स वेलफेयर इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एज वेल. इट प्रपोज्ड एन अम्ब्रेला लेजिस्लेशन
for social security of workers in the unorganized sector as well. Okay, that they paved the way, you can say, or recommended. So in this case, when it comes to the significance of the Second National Commission on Labor 1999, here A fits very much, into that bill. So A is the correct answer here. Coming to the next question. With reference to the impact of globalization, consider the following statements. Which of the given below statements is or are correct? Now, globalization was that process where interconnection of people across the world on various dimensions has happened, that included cultural, economical, political, technological, environmental aspects, and that has brought about significant or phenomenal changes in industrial sector as well in India. ना उसका इम्पैक्ट क्या क्या था, कई सारे थे, लाइक इंक्रीज वर्कर माइग्रेशन, एक्सपेंशन ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज हो गए थे, ग्रोथ ऑफ टर्शियरी सेक्टर वेयर हम लोग जो सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर एंड माइनिंग और नेचुरल रिसोर्स बेस्ड जो इंडस्ट्रीज थे उनसे हटके जो टर्शियरी सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, वो सब इम्प्रूव होने लगे थे. एंड अलॉन्ग विद दैट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था इंडस्ट्रियल रिलेशंस में इंडिया में. सो अभी स्टेटमेंट्स एक बार देखते हैं. ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू एन इंक्रीज इन वर्कर माइग्रेशन बोथ विद इन एंड अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स. दिस इज वेरी मच ट्रू, एक ओपन हो गया हमारा इकोनॉमी. The expansion of multinational companies has resulted in the creation of employment opportunities for the local workers in different countries. क्योंकि वो भी अपना business expansion कर रहे थे. On the other hand, हमें भी employment generation मिल गया था because they were opening their establishments here. Branches, yes, this is also true. The growth of the tertiary sector has been accompanied by a decline in the primary sector including agriculture and mining, and this is also very much true. जो natural resource based industries वो सब थे वो थोड़े से decline में आ गए थे because tertiary sector, service sector जो है वो improve होने लगे थे. Very much true. The technological advancements due to globalization have led to little or no impact on industrial relation. No, ये बहुत ही अच्छा impact आया था. So this is false, which we have already discussed the consequences of the globalization in India, especially on industries, right? So here only 1, 2 and 3 are true. Fourth is not true. So B is the correct answer. सो फ्रेंड्स, अर्लियर हमने देखा था कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एक अच्छे से इम्पैक्ट लेके आए थे इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे. हाउ, दैट विल लुक इनटू in this question. With reference to the impact of technological change on industrial relations, consider the following statements. Which of the given below statements is or are correct? Organizations adopt new technology primarily to reduce cost, improve efficiency and maintain a competitive advantage in the market. Yes, this is very much true. और किसी रीजन के लिए तो करते नहीं है. Yes, this is true. Increasing customer demand for high quality products at lower prices has led to the widespread adoption of benchmarking and quality standards such as ISO, BIS, Six Sigma, बेल्ट, वो सब स्टार्ट हो गए थे. यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि जब इंडस्ट्री टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने लगे एंड व्हेन द एंटायर ओपन अप हुआ था इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ विच कस्टमर्स में भी एक अवेयरनेस लेवल बढ़ गया था. सो दे वर फोकसिंग ऑन द क्वालिटी प्रोडक्ट्स. हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए नो, जैसे बाहर मिलता है उसी तरह से. ऐसा नहीं है कि सब स्टैंडर्ड होगा तो विल एक्सेप्ट. सो उस तरह से एक अवेयरनेस बढ़ गया था. दैट लेड टू द adoption of this benchmarking and quality standards. Okay, इसमें गवर्नमेंट का भी बड़ा रोल था. दे हैव ऑल्सो कम अप विथ वेरियस स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश्ड. नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट हैज एम्पावर्ड द वर्कर्स बाय इंक्रीजिंग देयर अवेयरनेस ऑफ लेबर लॉस, वर्किंग कंडीशंस, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स and various other work related all that. So yes, this is also true. Information technology that has empowered the workers a lot. कि दूसरे countries में किस तरह से है labor loss, वहाँ किस तरह की situation है. Okay, so that they have implied here. This is also true. The introduction of new technology has eliminated worker concerns regarding job security, redundancy and the need for skill upgradation. No, जब भी new technology आता है, obviously that will lead to the एक स्किल
अपग्रेडेशन एंड ऑल दैट, यस द एप्रीहेंशन, एक एप्रीहेंशन था अमॉन्ग द वर्कर्स की इस तरह से न्यू स्किल्स आएंगे तो उनकी जॉब सिक्योरिटी खत्म हो जाएगा, इकोनॉमिक बेनिफिट्स खत्म हो जाएंगे, या फिर उनके बिल्कुल वर्किंग वाले इसमें स्टाइल में बिल्कुल चेंज आ जाएगा. यस, सो दिस एप्रीहेंशन, वॉट एवर द एप्रीहेंशन दैट हैज अराइज ड्यू टू द इवॉल्विंग नेचर ऑफ द जॉब रिक्वायरमेंट्स विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, दैट हैज हैपेंड डेफिनेटली, बट वो नेगेटिव से ज़्यादा बाद में धीरे धीरे से दैट हैज़ बिन कन्वर्टेड ना एक पॉजिटिव की तरह ले जाके. हाउ दैट वाज डन, स्किल अपग्रेडेशन कोर्सेज, न्यू कोर्सेज को अपनाना, एंड जॉब वर्किंग वाले में कुछ चेंजेस लेके, एंड ऑल दैट दे हैव डन. यस, सो बट दिस इज फॉल्स इन दिस केस. सो ओनली 1, 2 and 3 आर द ट्रू स्टेटमेंट. So C is the correct answer here. Moving to the last question in this session. With reference to human resource management and human resource development, consider the following statements. Which of the following given statements are correct? So first, let us have a look at the human resource management and human resource development. What exactly are they and how they are going to impact the industrial relations? See, when we talk about human resource management, the name itself suggests management. It is a process that helps in proper utilization of the existing workforce in the organization and create such conditions and systems so that the employee efficiency will be increased. ओके, उस पर फोकस करता है किस तरह से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनको मैनेज करना है, सो दैट एम्प्लॉय एफिशिएंसी को हमें बढ़ाना है. ऑन द अदर हैंड, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ सिस्टमेटिक एंड प्लान्ड एक्टिविटीज that are designed to provide organizational members with the opportunities to acquire the necessary skills for current as well as the future job demands. So वो development ऐसा नहीं कि अभी के लिए कर रहा है या ऑलरेडी कर लिया है. सो इन ऑर्डर टू हैव दिस जो एफिशिएंसी है उसको स्मूथ रखने के लिए दे हैव टू प्लान सम ट्रेनिंग्स एंड ऑल दैट, राइट, दैट इज लुक after by this. So basically these are the basic you can say works, and that has an impact on the industrial relations. Okay, so let's look at the statements. The human resource management focuses on the overall management of the workforce, including recruitment, payroll, employee relations, and compliance with the labor laws. Yes, this is very much true. Okay. The human resource development, on the other hand, is a subject of HRM itself and involves systematic and planned activities aimed at enhancing employee skills for current and future job demands. Yes, this is also very much true, जो अभी हमने डिस्कस कर लिया था. HRD plays a crucial role in aligning employees' skill development with the organization's strategic goals. Yes, that is what the planning and systematic and planned activities are done, right? Okay, yes, this is also true. HRM and HRD are independent of each other, with HRM dealing with only administrative tasks and HRD focusing solely on training programs. ऐसा नहीं है, they are connected. Yes, this is true that HRM is concerned with the overall management of human resources, and in fact HRD is, जैसे हमने यहाँ देखा है, it is a part of HRM only. सो एज टू एक कॉन्क्रीट बेस मिल जाए HRM को, दैट ऑल वुड बी डन एज पार्ट ऑफ दिस HRD. जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिस तरह से जो प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते हुए या फिर मेन गोल जो है ऑर्गेनाइजेशन का उस पर फोकस करता है, सिमिलर इज द केस विद दिस ऑल्सो. सो HRD क्या है, इट फोकसेस ऑन डेवलपिंग द स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज so as to meet the organization strategic goals, and that all will support how the HRM only, क्योंकि वो overall management of the human resources करे. So this is false in this case. So here 1, 2 and 4 only are true, so A is the correct answer. So friends, hope you have liked the session, and before going any further, I would like to highlight one thing. EduTap has currently launched 3 major courses for all those who are targeting the upcoming UPSC EPFO APFC and EO और AO एग्जामिनेशन. सी इसमें 3 तरह के कोर्सेस है. एक तो सबसे पहले मैं मास्टर कोर्स के बारे में बताना चाहूँगी, वेयर इन आपको ये उन बच्चों के लिए यूजफुल होगा जो बिल्कुल अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दे लुकिंग आउट फॉर कंटेंट, सब एक ही जगह पे मिल जाए, 1 पॉइंट.
तो इसमें आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ्स, वीडियो लेसन्स, चैप्टर क्विजेस, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग यू विल फाइंड हियर अलोंग विथ कुलदीप सर एवरी वीक आपके लिए स्ट्रेटेजी सेशंस लेंगे कि इतना कंटेंट है तो उसको किस तरह से आपको यूटिलाइज करते हुए अपना प्रिपरेशन आगे लेके जाना है, एंड देन डाउट क्लैरिफिकेशन एंड ऑल दैट। इनफैक्ट वो एवरी थर्सडे होता है ये क्लास। ना दूसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज प्लस। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ऑलरेडी उनको कुछ सब्जेक्ट्स पे है नॉलेज, बट फॉर अदर सब्जेक्ट्स आर लुकिंग आउट फॉर कोर्सेज, एंड उन बच्चों के लिए ये कोर्स बहुत सही रहेगा क्योंकि इसमें उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का भी आपको कंटेंट मिल जाएगा कंप्लीट, ओके, इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, वीडियोस, चैप्टर टेस्ट एंड ऑल दैट, अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। सो देयर बाय उनका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, राइट। नाउ तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज। ये उनके लिए है जो ऑलरेडी पूरा अपना प्रिपरेशन कर चुके हैं ना, उनको एक रिविजन टाइप और एक प्रैक्टिस टाइप चाहिए। सो उनके लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू एनी ऑफ दिस कोर्सेज, आप टीम को आप रीच आउट कर सकते हो। एवरीथिंग हैज़ बीन मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो रीच आउट करके बेस्ड ऑन योर डिस्कशन यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑफ विच कोर्स suits you better. Okay, hope you have liked this session and thank you very much for being with me so patiently. Thanks a lot. If you have any queries you can reach out to us anytime. Thank you once again.